सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़। मैं तुहाडे नाल रुमन बाजवा। खबरां दा विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं हेडलाइनस ते। कैनेडियन पार्लीमेंट का वड्डा ऐलान, नवे साल तो पुराने नोट होणगे बंद। बैंक ऑफ कैनेडा एक्ट 2018 तहत 1, 2, 25, 500 और $1000 के पुराने करंसी नोटां नूं खत्म करने की मिली मंजूरी। टोरंटो विच वर्चुअली सैलीब्रेशन प्रोग्राम, 12 तक के बच्चे ले सकते हैं प्रोग्राम विच हिस्सा। गुरु नानक साहिब दी सिक्ख्यावां बारे कीता जावेगा बच्चों नूं जागरूक। ओंटारियो विच कोविड-19 की दूजी लहर, हंबर रिवर हस्पताल विच पहुंचे प्रीमियर डगफोर्ड वालों रैपिड टेस्टिंग की की गई शुरुआत। फील्ड रीजन विच कोविड-19 की मार, ब्रैम्पटन सेंटर तो एमपीपी सारा सिंह ने कहा, जरूरी सेवाओं में काम करने वाले लोगों लिए प्रबंधां दी घाट। सारा सिंह ने पेड सिक लीव का मुद्दा भी चुकया। सिख बच्चे की दस्तार की बेदबी का मामला, सिख बच्चे नाल बुरी तरह कुटमार की वीडियो हुई वायरल। तो बुलेटिन की शुरुआत में सब तो पहले गल करते हैं कैनेडा विच नवे साल तो 1, 2, 25, 500 और 1000 के पुराने करंसी नोट बदल जाएंगे। कैनेडियन पार्लीमेंट ने बैंक ऑफ कैनेडा एक्ट 2018 तहत फैसला लेंदिया $1, $2, 25, 500 और $1000 के पुराने करंसी नोटों को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। ये करंसी नोट 10 साल पहला ही छपने बंद कर दिए गए सन। बैंक ऑफ कैनेडा ने कैनेडियन लोगों को याद कराया कि 1 जनवरी 2021 तो ये पुराने नोट मार्केट में नहीं जा सकेंगे, इसलिए 31 दिसंबर 2020 तक इन नोटों को बदलिया जाए। जिन्होंने लोगों को ये पुराने करंसी नोट ने वो अपनी बैंकों राही इन्हों बदल सकते हैं या बैंक ऑफ कैनेडा को सीधे भी भेज सकते हैं। एक विश्वव्यापी सिख वातावरण समूह ईको सिख ने धरती तापमान बढ़न तो रोकने लिए अमरीकी राष्ट्रपति बिडेन वालों ले गए फैसले का स्वागत किया, क्योंकि इस मुद्दे को अमरीका की विदेश नीति के एजेंडे का केंद्र बनाया गया। ईको सिख यूएसए की प्रधान डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने कहा कि बिडेन ने जलवायु के संकट नाल नजीठण लिए वचनबद्धता दिखाई है और सही दिशा वाल एक बड़ा कदम है। जो बिडेन द्वारा मौसम के राजदूत वजों जॉन कैरी को नियुक्त किए जाने तो असीं बहुत खुश हाँ। उसने अगे कहा कि पेरिस के सन 2015 विच विश्व जलवायु समझौते विच कैरी की अगवाई बहुत ही महत्वपूर्ण सी अते इस नाजुक मुद्दे ते उन्हां दी नियुक्ति नाल विश्व लाभ उठाएगा। बिडेन की जित नाल अमरीका दीआं नीतियां विच भारी बदलाव आया है। इकोसिक के संस्थापक और ग्लोबल प्रेजिडेंट डॉक्टर राजवंत सिंह ने कहा कि नवे चुने अमरीकी राष्ट्रपति दीआं शुरुआती कार्रवाई दर्शाउंदियां ने कि वह जलवायु नूं अमरीका ते दुनिया का अति जरूरी मामला मानते हैं। जॉन कैरी नूं एक अमरीकी जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त करना पूरी दुनिया को एक अहम संदेश देता है। डॉक्टर राजवंत सिंह ने अगे कहा कि असीं भी खुश हाँ कि जॉन बिडेन ने पेरिस जलवायु समझौते विच मुड़ अमरीका को शामिल करने का भी वादा किया है। इकोसिक इस मुद्दे ते लंबे समय के टीचिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त करने ਲਈ आने वाले प्रशासन नाल काम करने ਲਈ भी तैयार है। धन धन श्री गुरु नानक देव जी के गुरपुरब मौके 3 नवंबर को ग्रेटर टोरंटो विच वर्चुअली सैलीब्रेशन प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जिस विच ग्रेटर टोरंटो एरिया के 12 साल तक के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों को छोटी उम्र में मोटिवेट करना, बच्चों को गुरु नानक देव जी दी सिक्ख्यावां ते चलण लई प्रेरित करना है। प्रोग्राम में जेतू रहे बच्चों को इनाम भी तकसीम किए जाएंगे। संगतां नूं वध चढ़ के शामिल होने की अपील की जाती है। तो जेकर तुसीं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो तो 3 नवंबर तो पहला स्क्रीन ते दिते इस नंबर से संपर्क किया जा सकता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की कृपा दे नाल ते आप सब दी ब्लैसिंग्स दे नाल असीं एक हंबल इनिशिएटिव लैके आए हैं, जिहदे विच असीं धन श्री गुरु नानक देव जी का गुरपुरब वर्चुअली सैलीब्रेट कर रहे हैं बच्चों के नाल। इहदे विच ग्रेटर टोरंटो एरिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रॉम एज 0 to 12। तो जोड़ा भी बच्चा ये पार्टिसिपेट करेगा असी उस बच्चे को गिफ्ट जरूर भेजांगे, प्लस उस बच्चे के बिहाफ से $1 सेवा फूड बैंक को भी डोनेट करांगे। साडे यह इनिशिएटिव का बेसिक परपस यह आ कि असी बच्चों को छोटी एज में मोटिवेट कर सकीए, इनकरेज कर सकीए तो इंस्पायर कर सकीए धन श्री गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वास्ते। जे तुसी इस वर्चुअल सैलीब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो प्लीज़ तुसी मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे फोन नंबर पर या इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप से। जे तुहाडा कोई फीडबैक है तुसी साडे नाल प्लीज़ शेयर जरूर करियो। असी उम्मीद करते हैं तुसी इहदे विच वध चढ़ के पार्टिसिपेट करोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। अगे बढ़ते हैं। सरी म्यूनसिपल काउंसलर जैक हुंदल नूं सोशल मीडिया पर किसी ने गोली मारन की धमकी दी है। इस संबंधी जैक हुंदल वालों पुलिस को शिकायत की गई है तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने उसके घर के बाहर सुरक्षा के कदम चुके हैं। जिक्र खास है कि जैक हुंदल RCMP के साबका अफसर ने सरी विच RCMP की थां म्यूनसिपल पुलिस लियाउण का विरोध करते रहे हैं।
ਜੈਕ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਕ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੋਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੋਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਲੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 81% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਵੀ 57.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਲੀ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 15,329 ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 12,532 ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮੈਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਸਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਟੌਮ ਬੈਰੀਹਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। 41 ਸਾਲਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 4 ਦੇ ਸਟੈਂਸਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਮੋਂਡੇਸਟੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ ਰੀਜਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। Yesterday, the Premier insisted that his government should not be criticised for their underfunded, inadequate COVID-19 response, because other jurisdictions actually have it worse. Yet there are neighbourhoods in Brampton that have a COVID-19 positivity rate of nearly 20%. One doctor describes this, and I'll quote, staggering number that suggests that there is a huge problem, end quote. There are now 165 patients in the ICU. That is 1 out of every 10 ICU beds in this province. When is the Premier going to stop justifying his inaction and start supporting people living in these hard-hit communities and the hospitals that serve them? The Deputy Premier and Minister of Health. Well, in fact, we are supporting Peel and the entire area since they have, unfortunately, needed to go into lockdown, as with the City of Toronto. We recognize that they need additional supports in order to deal with the rapidly increasing number of cases that they're seeing. What we have done is sent more case and contact managers into the area to assist with helping to identify people who have COVID-19 and their contacts. We're also expanding the hospital facilities for people that need to be in the hospital, and we're making sure that we have received help from some of the other public health units that don't have as high a number of cases in order to help by telephone support with case and contact management. So we recognize that Peel is going through a very difficult time. We want to help Peel get out of the lockdown as soon as possible, and we are providing necessary resources in order to help Peel to get there. The supplementary question.
Speaker, every day the Ford government downplays the impact of this pandemic. Peel Public Health data shows that essential workers on the front lines in manufacturing, transportation and healthcare have been exponentially more likely to be infected. They are not doing well, as the Premier likes to pretend. These people are facing a crisis, and facing it without help from this government. When will this government stop trying to protect itself and its bottom line and start taking real action to protect and support the people in this province who need it most? Minister of Health. Well, just to indicate the support that we are providing to Peel, we have established 3 new community-based testing centres. We have implemented mobile testing sites. We are opening limited walk-in availability at assessment centres for those people who are not able to either book online or make telephone appointments. And we are implementing up to 7 pharmacies or specimen collection centres in the next several weeks. We also have invested $42 million for up to 234 new beds at 3 hospitals, including alternate health facilities in Peel Region to support hospital capacity pressures and the continuation of surgeries and procedures. So we are providing both health supports in terms of hospital beds and supports as well as contact managing, testing and tracing. Supplementary. Speaker, and through you to the Minister, but help in a few weeks is not going to help us today. Working people in these communities hit hardest by COVID-19 don't need the Premier to continue to tell them that the pandemic could be worse. They need this government to actually step up with dedicated resources for testing and contact tracing through this pandemic, culturally specific COVID-19 outreach, urgent and direct support for small businesses, and direct support for those people who work with them. Start with a guarantee that they can leave work when sick without losing a day's pay. When will we see any of this? ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹੰਬਰਵੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟੇਗਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। I've been up here talking about the urgent need for rapid testing. Tracking and tracing is absolutely critical. If someone knows they have this terrible virus, they wouldn't go to parties, they wouldn't visit their grandparents, and they wouldn't spread it to their neighbors or friends. That's the difference testing and screening can make. And I'm here at Humber River Hospital today to provide an update on the rollout of the rapid testing. My friends, the new rapid tests are game changers. These new tests can turn around test results in minutes instead of days. In fact, the Abbott ID Now and the PanBio tests can turn around results in under 20 minutes. And we've been getting these tests as quickly as we can to the front lines of our healthcare system. I have one of these Abbott tests right here in my hand. These tests right here, folks, are a game changer. I'm here with Daniel St. Pierre from Abbott Rapid Diagnostics to personally deliver some of these rapid test kits. I want to thank Daniel and his team and some of the brightest minds in the entire world for developing these innovative tests. This kit in my hands is one of 1.2 million PanBio tests and 98,000 ID Now rapid tests that we received through the federal government. And more shipments are on their way. Humber River is one of 22 hospitals that will be receiving these test kits in the coming weeks. We're also sending these test kits to rural and remote communities where they'll help us cut down the turnaround times. And we'll also use these tests to conduct early investigations into outbreaks in hotspot regions. These new rapid tests will reinforce the robust testing strategy we have in place, a testing strategy that currently leads the country with over 5.8 million tests completed to date. More importantly, we will make sure that these rapid tests add an extra layer of defense in protecting our most vulnerable citizens. We've already deployed these tests in 36 long-term care homes and 27 retirement homes. The PanBio test will also be used in a screening program for our long-term care homes.
Over the next few weeks, dozens of our long-term care homes will use these tests to test staff and visitors to keep our long-term care residents safe while ensuring essential caregivers can continue to visit and worry less about endangering their loved ones. My friends, with the numbers where they are, testing is crucial, and anyone who needs a test will be able to get a test. We have over 150 pharmacies now offering testing and 174 assessment centers across the province. That's 324 locations that you can go get a test. ओंटारियो ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। Ontario has continued to be a national leader in testing. This is in large part due to the tireless efforts of our heroic lab technicians, pharmacists, nurses, and other frontline staff. Thank you. As part of our fall preparedness plan, we committed to expanding our testing capacity and options for all Ontarians. In support of this, our government is proud to have strongly advocated for the approval of rapid tests. These tests will help provide timely access to testing in regions with high transmission, as well as rural and remote regions with high turnaround times. As part of our partnership with the federal government, Ontario has received 98,000 ID Now and 1.2 million PanBio tests and is expecting to receive up to 1.5 million more PanBio tests by the end of December. ID Now will initially be used in hospitals and assessment centres in rural and remote communities. It will also be used to test people as part of early outbreak investigations across the province, including in hotspot regions such as Toronto and Peel, where there are high concentrations of COVID-19 cases. 2 hospitals are already using ID Now, with 20 other hospitals about to launch rapid testing, including right here at Humber River Hospital. Continued rollout of ID Now is planned in Toronto and Peel, and work is underway with Ontario Health and local public health units to support rapid testing deployment across the province. PanBio will initially be used to support a screening program for long-term care homes. To date, PanBio tests have been deployed to 6 long-term care home operators for potential deployment in over 30 homes, 27 retirement homes, 8 hospitals, and 11 industry partners such as Ontario Power Generation, Air Canada, and Magna, with plans to expand further across the province. These tests will also be used in a broader 8-week pilot over a 5-month period for interested employers in the private, public, and nonprofit sectors. This pilot program is an important opportunity to learn about the value of antigen screening for asymptomatic workers in a range of workplace settings, and will inform future decisions about safely and fully reopening the economy. As both ID Now and PanBio tests are new, they will be carefully evaluated. However, we are confident these tests will provide Ontarians with more access to innovative testing options and will help to quickly identify and manage outbreaks to stop the spread of COVID-19. Our government will continue to work with our system partners to expand testing capacity and evaluate new and emerging technologies and quality testing options. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪੀਲ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਦੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Thank you, Minister, and Dr. Tam, for being here today. I'm grateful to all other witnesses for appearing as well. All of you, along with the public service, have been working tirelessly since the beginning of the pandemic to keep us safe. Thank you. Minister, we have spoken several times about how the pandemic is affecting my constituents in Brampton and Peel region. You were there as well. While I know that the government provided support to Ontario, including sending in the Canadians Armed Forces and providing other resources, what is the current status to support being provided to Ontario when Peel is in the red zone?
Thank you so much through the chair and to the member for hosting me in Peel and Brampton. It feels like a lifetime ago, but just a couple months ago. And in fact, it was lovely to meet the Chief Medical Officer of Health of that region, Dr. Lowe, who's working so hard to protect the residents of Peel. Of course, we're there for Peel region, and we've been working very closely with Peel region to support and augment the response to the pandemic and the growth of cases in Peel, including supporting the ability to have a safe isolation center, something that Dr. Lowe said would be particularly useful. In fact, this will be, I think, an important addition to that region, which features oftentimes large multi-generational families, really crowded housing conditions, and we know that one of the primary routes of infection is to other family members. And so this self-isolation center that the region will facilitate and that the federal government will fund will actually provide an opportunity for people who have been diagnosed with COVID-19 and or their close contacts to remove themselves from the family household and thereby reduce the spread. We are also there for Peel region supplying additional contact tracers, and we'll be there for them as well with additional capacities as required, and we continue those conversations. ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। The honourable member for Brampton East. Today, Canadians commemorate the loss of Manmeet Singh Bhullar, who gave so much to his community here in Canada and particularly vulnerable Sikh and Hindu communities abroad. As Mr. Bhullar once said, the greatness of humanity, the greatness instilled in every human being, the greatness of serving is to be realized and developed. That is my hope and that is my dream. As we reflect on his contributions and his memory, can the Minister for Immigration, Refugees and Citizenship tell us what the government is doing to carry on his important work? Honourable Minister of Immigration. Well, I thank my colleague for the question. The Manmeet Bhullar Foundation is a fitting tribute to a leader who gave so much to Canada and the world. His legacy continues through the Foundation's advocacy, which is an irreplaceable conduit of Canadian compassion in support of vulnerable Sikh and Hindu populations abroad. I look forward to further strengthening our partnership and building on our efforts to provide refuge for those fleeing conflict and persecution. ਨਿਆਗਰਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਮਰਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। Speaker, small businesses have always been at the heart of Ontario's economy in Niagara West and across the province. They represent jobs, hope and opportunity for the people of this province. Due to the pandemic, thousands of small businesses across the province have had to close their doors to help contain the spread of COVID-19. I know this has been exceptionally difficult. Unfortunately, many small businesses in Ontario do not have an online presence, which makes it hard for them to deal with the loss of physical sales. I'm wondering if the Minister could please tell the House what the government's response has been to helping small businesses adapt to the digital marketplace in Niagara West and across the province. The Associate Minister of Small Business and Red Tape Reduction. Good morning, Mr. Speaker, and thank you to the member for Niagara West for that question. Mr. Speaker, there's no sugarcoating it, and as we said yesterday, these are difficult times unlike anything we have ever seen before in this province. And our government understands that small businesses have been forced to adapt very quickly, and that's why we responded through the $57 million commitment to Digital Main Street, the largest investment by any government in the history of this country to help businesses go digital. Growing a business online, expanding into e-commerce, has become a huge priority for many business owners. Through our investment, small businesses can now receive grants of up to $2,500 to help launch their business online. The program is going to help up to almost 23,000 businesses create and enhance their online presence and generate jobs for more than 1,400 students across the program. Thanks to this program, Main Street businesses will be able to expand their offering and seize opportunities online. The supplementary question.
Thank you very much, Speaker, and my thanks to the Minister for this response. I know that this investment is incredibly important for many small business owners in my community and right across Ontario. When the pandemic began, many small businesses and businesses across the province were preparing to shut down, but supports like these have helped to bolster many of these businesses. Speaker, could the Minister please update the House on the results of the Digital Main Street Grant Program over the last few months? Associate Minister. Thank you to the member for that question, and I'd be happy to update the House on the progress of the Digital Main Street program. Over the first 5 months, we received 7,900 applications and businesses that signed up for the Digital Main Street Shop Here program, and almost 2,500 just in the last month. And I'm proud to say that approximately 45% of these businesses are from outside the GTA, while 45% of the applications identify as female entrepreneurs. We have also established 79 digital service squads across Ontario to provide support for website setup. ओंटारियो सरकार ने ऐलान किया है कि 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਲਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सूबे के मुख्यमंत्री डग फोर्ड, सेहत मंत्री ते लॉन्ग टर्म केयर के मंत्री ने मंगलवार को इसकी टोरंटो में घोषणा की। सरकार कहे कि उन्होंने उम्मीद है कि जल्द ही हुण 98,000 ID नाउ रैपिड टेस्ट 1.2 मिलियन पैनबाओ रैपिड टेस्ट और होर 1.5 मिलियन होर पैनबियो टेस्ट नवंबर के अखीर में हो जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि इन्होंने टेस्टां नाल लोकां नूं कोरोना रिपोर्ट का वधेरे इंतजार नहीं करना पेगा ते नालों नाल कई लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा। इत्थे दस दईए कि ओटावा हस्पताल और सोल्जर मैमोरियल हस्पताल उरीलिया में ID नाउ टेस्ट हुंदा है ते 20 मिनटां विच रिपोर्ट सामने आ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के मामले बहुत तेजी नाल वधन कारण टोरंटो ते पील रीजन में तालाबंदी की गई है। कैनेडा के सूबे ओंटारियो में भारी बर्फबारी हुई तो इस कारण ठंड होर वध गई। सर्दियों की पहली बर्फबारी देख लोगों के चेहरे फुल्लां वांग खिड़ गए। हालांकि ड्राइवरां नूं काफी परेशानी झेलनी पई, जिवें कि पहले ही दस्सिया गया सी कि कुछ खेतरां विच रिकॉर्ड पद्धर ते बर्फबारी होएगी। अजिहा ही होया। सब तो वध भारी बर्फबारी ब्रैम्पटन विच होई है, जो 24.5 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। 22 नवंबर नूं टोरंटो के पीयरसन हवाई अड्डे ते 19 सेंटीमीटर उच्ची बर्फ की ढेरी लग गई। इसने 2007 का रिकॉर्ड तोड़ दिता है तो उस तो 7.6 सेंटीमीटर वध बर्फबारी हुई। वातावरण कैनेडा ने चेतावनी दी थी कि इस बर्फीले तूफान तो बचने लिए लोगों को पहला ही प्रबंध करने चाहिए ने काफी हद तक लोगों ने इसका ध्यान भी रखा है। सड़कां तिलकड़ियां होने कारण आवाजाही काफी प्रभावित हुई। लोगों ने इसका काफी मजा लिया और कई ने स्नोमैन भी बनाया। लोगों ने इस बर्फबारी में सैर की ते तस्वीरां ते वीडियो भी साझियां कीतियां। ऑरेंज कॉर्नर्स का हाईवे 7 भारी बर्फ नाल ढक गया। कैनेडा के सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण सूबा सरकार ने सख्ताई होर कर दी है। ओंटारियो के लंदन के एक हस्पताल ने दस्सिया कि उन्होंने हस्पताल में 41 मरीज और स्टाफ मैंबर कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। लंदन सेहत विज्ञान केंद्र ने कहा कि कई हस्पताल कोरोना के शिकार हुए हैं। इसका सब तो पहला मामला यूनीवर्सिटी हस्पताल में 10 नवंबर को सामने आया सी। इस दे नाल ही मैडिकल सुविधा वाले खेतर में कोरोना के मरीज सामने आए। डॉक्टर क्रिस मैकी, जो सेहत अधिकारी ने कहा कि मिडेलैक्स लंदन सेहत यूनिट मुताबिक स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना नाल अजिही स्थिति बन गई है जिवें कि कोई व्यक्ति सावधानी हटाउंदा है जां कोरोना नियमां की पालना में अणगहली बरतदा है तां कोरोना उसनूं जकड़ लैंदा है। अधिकारी ने दस्सिया कि हस्पताल के हरेक व्यक्ति की दोबारा कोरोना टेस्टिंग होएगी। यूनीवर्सिटी हस्पताल की चौथी मंजिल से कोरोना के 34 मरीज मिले ने। इन्हां विचों 16 हस्पताल के स्टाफ मैंबर ने अते 18 मरीज ने ते एक मरीज की कोरोना कारण मौत हो गई। सो फिलहाल खबरां दे इस बुलेटिन च नहीं, इस दे नाल इजाजत दिओ। धन्यवाद।